It's a huge day for Bardhaman Police and as well as for you. So how everything is going on? We just got a small little bit time in before this started. It's actually an important day for us because today we are having the carnival in Bardhaman town. Yes. So it's for the first time the carnival is being organized in Bardhaman town, and point is that we haven't never had any experience organizing the carnival. So that's why we are anticipating a huge crowd today. So there have been traffic restrictions. Any approximate figures, sir? Approximately around 2 to 3 lakh people will be there on the streets. My goodness. So as I was telling you that we don't have any prior experience of organizing the carnival. So I just now completed my briefing. So let's hope that things fall in place and we do well. So probably it will be around midnight the entire things gets over, because there are 32 puja committees who are lined up for the carnival, and it's a stretch of around around 3.5 kilometers from the starting point to the to the main dais and then to the ending point. I think this is for the first time you are also setting the SOPs. Like you be here or not be here, but that will be followed. Yeah, correct. I mean, founder of the SOP for Carnival. Not really. Police is all about improvising, So, but we just thought what are the possible avenues where we could go wrong, or where any incident can happen. So we have had a number of meetings with all the stakeholders. That includes the puja committees, the civil department, the fire, electricity, medical, the MV team, motor vehicle team. So we have had number of meetings, and we also have a functioning control room out here right now. At 2 different places, we have a static control just in front of the main dais, and the PCA room. The static control room is basically through RT mobile. RT sets will be static RT set will be deployed there, and apart from that, we all will be handling our manpacks today. So because there's going to be so much noise, and it will be very difficult to talk over the phone. So most of our communication will be over the RT. Okay. So these are, sir, like if I talk about, these are the homeworks which every officer is being trained while the training. But when reality hits, things are different. So how is the experience? Like it's one of the exam going on right now on you. Yeah, I mean, see, there are a couple of things. The most important thing is that in training, there is a set pattern, but in reality, in the ground, should I say, there are probably a number of possibilities where things can go wrong. And here, if anything goes wrong, it is, I mean, lives are at stake. We need to understand. So, for example, we have we also have immersion going on. So we have checked that all the all the puja committees who are taking part in the immersion, taking part in the carnival, where all they will be immersing the idols. So having police arrangement, good police arrangement in place, having police arrangement also in the place where all the vehicles would enter the ghats, because otherwise there will be a chaos of traffic. So let's see. So I can't say that it will be flawless, but hope we minimize the flaws, and everything goes on well. No, I am 100% sure everything goes on the right way when it's already in the right hand. So what about, sir, crime management and everything also keeps in mind when a huge function goes on, because there are people who will try to make some chaos of it? Yeah, definitely. We have our we call them PC teams, plain clothed policemen teams, who will be on duty at different places, just to check whether some pickpocketers or someone Those are like people in civil dresses. Whom you won't be able to identify, but we know them by their faces, or we have some sort of identification. So they will be mixing in the crowd, and the moment they say any nonsense, any nuisance happening, definitely the person will be rounded up. And talking about crime during the festive times, you won't believe, in the Navami night, I just slept around 1, and I received a call at 1:30. I do have a bad habit or good habit, I don't know, of receiving calls from any unknown number also, which comes to my mobile in the night. So I received a call at 1:30 that some drunken persons, they're creating ruckus, and some person has been badly hit. So immediately I
I called up the I called up the police station to deploy, and thankfully we had arrested. Next day we had arrested, and he was also sent into custody. So things keep on happening. Crime also keeps on happening during the festival time. So that's why we need to be more alert, because apart from the bandobast and law and order arrangements, crime is also something which we have to keep in mind. There's one thing I just pointed out when you said that I got a call around 1:30. तो आपने फिर पुलिस स्टेशन वाले को इन्फॉर्म किया एंड थिंग्स व्हाट आर द थिंग्स नीड टू बी डन, इट्स बीन डन. समवेयर ऑल द पीपल वर वर्किंग ऑन द फील्ड, लोगों को ये लगता है कि अरे एसपी साहब तो सो गए होंगे, 1 बज गए. दैट है कि नहीं, ही कैन बी अलर्ट एनी टाइम. हाँ, मतलब अब क्या है, मतलब क्या कर सकते हैं, ये हम लोग का मतलब व्हेन वी साइंड अप फॉर द जॉब्स, आई मीन व्हेन वी गॉट इनटू द जॉब्स, in fact this is something which this comes up with a job, it's a 24/7 job, especially when you are in the district, you're in the field posting, so there's no other option. Okay. I mean, you have to receive calls, you have to receive the complaints and make sure that proper action is being taken, because otherwise people lose faith on the system, people lose faith on the chair, the SP's chair. Exactly. So I think that's a requisite of the job. I don't think so I've done anything extra per se, but then I think that's a job requirement. This is one thing I meeting after so many officers, I understood that the glory or the glorified things which we see behind bureaucrats, the reality is different. Yeah. If you can share. I'm experiencing today also. You just say you came, you are in so much of works. I knew it took some time and you will be again busy back to back. I understand, but if you just can give example, because many people think बस एक बार यूपीएससी क्लियर हो जाए जिंदगी सॉर्टेड है. हाँ, मतलब आई थिंक ये बहुत बड़ा गलत फहमी है कि एक बार यूपीएससी हो गया, एक बार आप सर्विस में घुस गए, खासकर पुलिस में घुस गए, आईपीएस में घुस गए आपको, तो आपको कुछ नहीं करना. टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट्स अ मिसनोमर. आई विल गिव एन एग्जांपल. बीइंग दैट डे you all were here in the pujas. In the entire 4-5 days, I could just get out with my kid and my wife just once for say 1.5 hours just to see 3 pandals. Oh my god. So I mean, they had their time, they went outside on them. But that personal family time. Yeah, in fact it goes for a toss, to be very honest. And by the time you return home and everything, you just feel that you just want to relax probably with a cup of tea. There's one question, in life we go with many emotional balances. Like, it's something going in your personal life, you can't show it because outside you are an SP. Nobody gives a damn, what happened to you. People want the solution then and there right now. That's one of the biggest challenge. I think no universities, no one teaches you. That's life teaches you. Any example, or how do you tackle yourself at that point of time? Yeah, that was a very very nice question you really put, because thank you. So because to be very honest, no one gives a damn what's happening in your lives. It's all about how do you do jobs probably, because when they talk to me, they don't talk to me as a person. They're talking to the they're talking to the SP Saab of the district, where they come up with the problems, and that needs to be sorted. Because they think that, and they're right, that government has put me in this post, in this particular chair, so I should be able to solve their problems. In fact, if not completely solve their problems, at least give them a patient hearing and try my best to solve their problems. So it doesn't matter what's going inside my mind or inside my life or everything, but probably it's very important that what I'm actually doing. As Batman, I'm one of in fact my favorite character. There's a very famous dialogue that it's not who you are underneath, it's what your actions are defining. So probably it's just my actions, probably I'll be remembered or whatever as a police officer in this district. कल रात को मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था ऑफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी. अच्छा. तो उसने पूछा कि ज़िंदगी ने आपके क्या सिखाया. तो उसने बोला कि ज़िंदगी मैंने एक चीज़ सिखाया, कब, कहाँ और क्या बताना है, ये मुझे ज़िंदगी सिखा दिया. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर प्लेस, क्योंकि यू आर अ हेड ऑफ अ ब्रांच, लॉट ऑफ पीपल है ना, यू गेट अ ओवरव्यू, दिस एडिशनल एसपीज, डीएसपीज एंड एनीथिंग, किसको कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है और किस तरीके से काम करवाना है. बिकॉज दिस विल नॉट बी एन आंसर फ्रॉम साइड, दिस विल बी टिप्स फ्रॉम फॉर मी हाउ टू डू टीम मैनेजमेंट. मुझे तो ये लगता है कि सबसे बड़ी बात है, मतलब
एक तो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी पोजीशन में हो, से एसपी हो या कहीं पे भी हो, सब जस्ट बिकॉज यू नो यू आर इन अ लीडिंग पोजीशन और जस्ट बिकॉज यू आर द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डजंट मेक यू अ लीडर बाय डिफॉल्ट। ये मेरा मानना है, दैट्स अ पर्सनल ओपिनियन। यू नो आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा या आपके एक्शंस ऐसे होने होंगे या आपका वर्क यू नो योर व्यवहार और योर बिहेवियर टुवर्ड्स अदर्स शुड बी सच दैट दे शुड फील हाँ एसपी साहब जब कुछ बोल रहे हैं तो हमें करना चाहिए। पर्सनैलिटी बिल्डिंग। एग्जैक्टली। उसके बाद यू नीड टू यू नो सब जैसे हर मरीज को सेम दवा से काम नहीं होता तो किसी को प्यार से, किसी को थोड़ा सा यू नो और पुश करके, किसी को थोड़ा सा एकदम, तो किसी को थोड़ा सा यू नो फर्मली और बोल के। तो ये आपको एसेस कर लेना है कि किससे आपको कैसे काम निकलवाना है, बिकॉज एंड ऑफ द डे we all are working for the system. We need to understand we are all working for the system. We are all working for the, you know, for the public betterment, for providing them services, because end of the day it's an Indian public service. It's an IPS. It's not any other job. It's a service. To be very honest. So लोग बोलते हैं कि मैं अपने अपने काम को लेके बड़ा इमोशनल हूँ, कि एसपी साहब बड़े इमोशनल हो जाते हैं। मुझे लगता है मे बी हाँ गलत है प्रॉब्ली बट मुझे कभी ये लगता है कि ये तो कोई नॉर्मल कोई आपका प्रोफेशनल जॉब नहीं है, इट्स अ पुलिसिंग जॉब। एंड कभी कभी शायद इमोशन मतलब इमोशनल होना पड़ता है। मे बी आई माइट बी रॉन्ग, आई टोल्ड दीज आर ऑल माई पर्सनल ओपिनियन। तो मुझे कभी कभी लगता है यार इमोशनल तो होना पड़ेगा। अगर आप अपने इस जॉब को लेकर इमोशनल नहीं हो तो यार मतलब कहीं मैं आई एम नॉट गिविंग माई 100%, मुझे लगता है। सो या तो ऐसे ही है। Are you happy like whatever you thought before coming to the service? Everything is going I'll tell you, बहुत बढ़िया। You know, sometimes my family cribs, my wife cribs actually, sometimes कि कहाँ फंस गए हो, इससे अच्छा you know विदेश में होते कहीं पे बढ़िया। अब थे भी। हाँ मतलब most of my friends काफ़ी you know Facebook is such a thing which I hate sometimes, Facebook और Instagram, क्योंकि यार वो वेकेशन पेरू में वेकेशन जा रहे हैं, मैचू पिचू देख रहे हैं, या मेक्सिको में जा रहे हैं, या you know then you get your family pressure. then you know I don't see, मुझे फर्क नहीं ज़्यादा नहीं पड़ता, बट मेरे फैमिली को बहुत पड़ता है, क्योंकि you know because this job I don't get time for my family, forget you know going for a you know vacation and everything. So but end of the day मुझे लगता है मैं इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलता हूँ, विच इज़ यू नो इन मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, दिस इज इकोनॉमिक टर्म, इकोनॉमिक्स का टर्म है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मी वर्किंग दिस जॉब इज़ वेरी हाई। व्हाई एम आई सेइंग दैट? बिकॉज मैं जो छोड़ के आया हूँ यू नो, और मैं कोई जिस जगह पे मैं हो सकता था अभी, एज आई सी माई बैचमेट्स आउट देयर, तो काफ़ी अच्छा पोजीशन था। जब मैं वो चीज़ छोड़ के जब मैं यहाँ पे आया हूँ, there should be something which is you know pulling me here. तो एटलीस्ट यार किसी अनजान इंसान को भी यार, कोई दिन में मेरा अगर टारगेट है कि 2 अनजान इंसान जो मेरे पास आए, उनका यार किसी भी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं यार, यू नो इफ आई एम एबल टू यू नो प्रोवाइड देम सम रिस्पेक्ट, आई थिंक माय जॉब इज डन। दैट गिव्स मी हैप्पीनेस। इसीलिए मेरा एक अनसेट रूल है कि यू नो मेरे पास लोग आते हैं, द पब्लिक कीप्स ऑन कमिंग, उनको सबको बुला हुआ है, सबको पता है कि एसपी साहब के पास आने के लिए आप सिफारिश किसी का लेके आइए, मत लेके आइए, आप कौन से इकोनॉमिक स्टेटस से हैं, क्या है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेरे ऑफिस में आप मुझसे मिल के ही जाएंगे, मेरा ये फंडा है। तो हाँ, आपको हो सकता है कभी 30-40 मिनट वेट करना पड़े, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो देयर मीटिंग्स एंड एवरीथिंग, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप मुझसे मिल नहीं सकते, बिकॉज उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसका ये फ़ायदा है कि यहाँ पे जैसे डिस्ट्रिक्ट्स बहुत ह्यूज डिस्ट्रिक्ट्स, आई टोल्ड यू, तो अगर लोग मेरे पास आ रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट से, दूर से 2 घंटा 3 घंटा करके ट्रैवल करके आ रहे हैं ट्रेन से वगैरह से, दे डिज़र्व टू बी हर्ड। यस एग्जैक्टली, दे डिज़र्व टू बी हर्ड। मैं कोई राजा महाराजा तो हूँ नहीं कि यार यू नो कि वो मुझसे नहीं मिले। और सबसे बड़ी बात है, राजा महाराजाओं भी तो दरबार होते थे। हाँ एग्जैक्टली। सो दैट इज़ माई पॉलिसी कि मैं यार मिलूंगा उससे, और मैं मिलता हूँ चाहे कोई भी हो। हाँ, वही थोड़ा सा टाइम हो सकता है लग जाए उनको बैठने के, बट आई एम ओपन एंड आई कीप ऑन मीटिंग। ये मेरा पॉलिसी रहा है, हमेशा रहेगा। एग्जैक्टली। और इसके फ़ायदे ये भी है कि जितने मेरे पुलिस स्टेशन से, उनको पता है कि एसपी साहब के पास ये इंसान अगर पहुंच गए तो एसपी साहब तो पक्का वो करेंगे कि भाई इसमें आपने क्या किया है, वाई एक्शन हैज़ नॉट बीन टेकन, इसमें डिले क्यों हुआ है। तो यू नो
checks and balances भी maintain रहता है. That's my way of thinking, you know. So supervision बोल लीजिए आप. नहीं, मैंने जब हम कुछ दिन पहले स्टोरी डाल रहे थे कि आपके साथ ही हम शूट कर रहे हैं, काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स प्रेज्ड यू. आई डोंट वांट टू टेक द नेम, फिर उसको देयर आर मेनी थिंग्स. हाँ, थैंक यू टू ऑल सर्स एटलीस्ट. तो हाँ, तो दिस लास्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू टेक, बिल्कुल, दैट आई वोंट टेक मच ऑफ योर नहीं, टाइम, लॉट ऑफ वॉक्स, है ना. कभी कभार होता है ना कि आपको पता है आप अच्छे काम कर रहे हो, बट दुनिया आपको दबाते हैं, तभी गुस्सा नहीं आता, लगता है क्यों नहीं समझ रहे यार, मैं तो कर रहा हूँ. फिर कैसे करते हो अपने आप को? ये एक्चुअली होता था स्टार्टिंग में, अभी भी ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं होता है, बहुत बार होता है कि यार करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है सही है, मुझे लग रहा है सही है, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, यू नो, व्हाई एम आई नॉट एबल टू डू इट, बिकॉज आई एम गेटिंग सो मच opposition from different corners. Then I start thinking कि यार कोई भी चीज़ अगर मैं नया कर रहा हूँ, why don't I see what benefit it is going to give them. जो अपोज कर रहे हैं उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, उनका क्या फ़ायदा होने वाला है. If I am able to put that across, maybe that person or that section would be convinced. क्योंकि ऐसा मतलब मेरा ये मानना है कि ब्यूरोक्रेसी में जो भी होता है, कोई भी चीज़ इनर्शिया, कोई भी नई चीज़ के लिए इनर्शिया बहुत ज़्यादा हाई होता है. लेट बी ऑनेस्ट, इफ़ आई इनर्शिया कोई भी चीज़ के लिए, मतलब आप अगर सिस्टमिक चेंजेस करो अपने डिपार्टमेंट के अंदर, या आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें विच इन्वॉल्व्स स्लाइट बिट ऑफ चेंजेस में इनर्शिया बहुत ज़्यादा होता है. एंड आई टोल्ड यू आपसे, मतलब वी हैड अ डिस्कशन दैट कोई भी चीज़ यहाँ पे मेरा एक ही फंडा है कि कोई भी अगर नया चीज़ करूँगा और इम्प्लीमेंट करूँगा तो मेरा यही फंडा है कि पीपल सेंट्रिक नहीं बना के सिस्टम सेंट्रिक बनाऊँ, ताकि एटलीस्ट इट डज नॉट डिपेंड हु सो एवर इज देयर, ये अपने आप थिंग्स रोल ऑन अपने आप चलता रहे. तो होपफुली 2-3 नया चीज़ के लोगों को ठीक ठाक लगा है, और दिमाग में 2-3 चीज़ें ऑपोजिशन भी मिला है 1-2 चीज़ों के लिए, तो कन्विंस भी कराना है. तो बट मुझे लगता है कि अगर जिद्दी मेंटालिटी ना, मतलब करके रहना. हाँ, मतलब जिद्दी नहीं बोलूँगा मैं, बहुत ढीठ हूँ. ढीठ इज द करेक्ट वर्ड. आई एम वेरी स्टबर्न, सो सैडली. सो आई होप, आई थिंक क्रिएटिव पीपल आर स्टबर्न, यू आर समवेयर क्रिएटिव. पता नहीं, आई एम वेरी स्टबर्न. आई मीन पीपल डोंट लाइक मी फॉर दैट, बट somehow मैं स्टबर्न बन जाता हूँ एट टाइम्स. सर, अच्छे लोगों को दुनिया वैसे पसंद नहीं करते. तो एनीवेज, बट होपफुली आई एम एबल टू डू ठीक ठाक. मतलब एटलीस्ट हम लोग के लिए क्या है, हम लोग तो कोई भी जगह पे कहीं पे भी पोस्ट होते हैं, वी आर लाइक व्हाटएवर, 1 साल 1.5 साल 2 साल 2.5 साल, तो हम लोग फिर वो जगह छोड़ के चले जाते हैं. ये डिस्ट्रिक्ट मेरा घर है अभी, एज आई एम पोस्टेड हियर, फिर यहाँ से मैं कहीं और चला जाऊँगा, तो व्हाट्स माई टेक, मुझे क्या मिल रहा है? मुझे यही मिलेगा कि यहाँ पे लोग एटलीस्ट मुझे याद रखें. मेरा बस इतना ही, लोग बस याद रखें, आई एम मोर देन हैप्पी. बस कि वट एवर आई हैव डन, एटलीस्ट कोशिश तो किया मैंने विद द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज. इतना अगर लोग याद रखें, आई थिंक दैट्स द बेस्ट विच आई कुड गेट फ्रॉम दिस जॉब. एंड कमिंग बैक, दैट रियली मेक्स मी हैप्पी. सो बस ठीक है. A huge motivation you gave to me. I said that was the last question, but a last self-obsessed question. अरे बिल्कुल. Any feedback for us? What you felt and how was it? नहीं, बहुत बढ़िया है. आई थिंक बहुत अच्छा लगा, एंड एंड बहुत करेक्ट टाइम पे आप लोग आए हो. सो वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू गाइज हियर. दुर्गा पूजा है, आई एम सॉरी मैं टाइम नहीं दे पाया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. It's enough time you have given. बट हम लोग ये दुर्गा पूजा का फेस्टिव माहौल होता है, एंड माँ दुर्गा इज नॉट जस्ट अ deity for us. She's just not a goddess, but she's a part of family. She's like a daughter who is coming to a home for puja and everything. So बहुत ही अच्छा टाइम था when you guys came. And feedback मतलब यही है कि I hope you keep up the good work. बहुत बढ़िया. And future में जाके मुझे ये I really hope and really expect कि ऐसा हो कि आपका मैं चैनल आपका वो फॉलो करूँ, सब्सक्राइब करके रखूँ, एंड नए जो इनिशिएटिव्स या इनोवेशंस जो अदर डिपार्टमेंट्स हो, पुलिस हो, कहीं और भी कर रहा हो, इफ़ यू कवर दैट ऑल्सो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अ पर्सन लाइक मी. बिकॉज मैं उसे देख के आई डोंट वांट टू री इन्वेंट द व्हील. व्हाई शुड आई, किसी ने किया है उसको व्हाई डोंट आई डू इट? बिकॉज एंड ऑफ द डे यही है कि पुलिसिंग हो, चाहे कोई भी करे. तो मैं उससे आई वुड लव टू सी दैट, एंड आई वुड लव टू लर्न फ्रॉम दैट. So that will be very nice. We'll try my best. Thank you. Thank you.